Sir, I'm asking you a different question. You are arguing your case. Sir, one second. Sir, I am saying that such a direction can be given because it's enforcement of constitutional rights. What order should be passed? Just a simple question. You are arguing your matter. That the federal government, my humble prayer is that the federal government be directed to sit with stakeholders and make for the same kind of code of conduct that they made for broadcast media to enforce Article 19. Fine. Wishes. If wishes can be, what do they say? Now, please tell us, can we pass such an order? I would believe that's enforcement. You should never begin with a thing with I. Refer to the law. Can we do it? So assist us now. My Lord, certainly this Honorable Court can enforce constitutional rights. We can request the Attorney General meet the President of the Supreme Court. We can certainly do that, but can we pass an order directing? That's a big difference. Sir, अगर ये भी हो जाए, तो ये खुद भी सब तैयार हो जाए. There must be some law for regulating the YouTube. If there is no law, then there is no the rules. There is no law है. एक सेकंड ये बात कर रहे हैं. जी सर. सर बात ये enforcement of constitutional right के लिए certain है. उसको उन्होंने regulate किया है ordinance के तहत ना, Electronic Media Regulatory Ordinance 2002 का ही है. तो उसके अंदर वो चीजें बन रही हैं ना. If there is some law that should be regulated or should regulate the सर है डिजिटल मीडिया पे लॉ है. डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान में कौन सा लॉ ये बताइए ना. उसमें उसके ऊपर कोर्सिव एक्शन लेने के लिए तो है, उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं है ना. आप पिका में आप उसको कर तो रहे हैं, बट वो आप हाउ टू रेगुलेट दी यूट्यूब ये तो बताइए आप. My lord, there are laws. The only problem is that they don't come with specificity and they are more on the criminal side. And problem होती है कि कोई gray area नहीं है. या तो they say wild things on digital media and wilder things happen to them. And that's the problem, isn't it? Because there isn't that legal framework. देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब वो 2002 का जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है उसमें तो कवर होते हैं, बिकॉज पब्लिकेशन का मतलब इंटरनेट भी है उसके. सर पेज 15 पे मैंने वैसे टेबल लगाई हुई है सारे लॉज की. पेज 15 पे सर अगर आप नंबर 3 पे देखेंगे, सो देयर इज दैट रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, प्रोसीजर, ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स ऑफ 2020. अच्छा ये पेज 15 है पिटीशन की. दिस इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 27 ऑफ 2022. नहीं वो लॉ कौन से आप कह रहे हैं सर? ये है रिमूवल एंड ब्लॉकिंग की जो फर्स्ट प्रेयर है ना, डायरेक्ट्स द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक कोड ऑफ conduct. Tomorrow you will be the first to criticize us that this is amounts to censorship. Okay, and the Supreme Court had no jurisdiction. Please assist us on these points. I mean, what power are we exercising? Are we legislating? Yes. Are we interpreting a law? Yes, we can do that. If there's some provision in the law, we can maybe interpret it in your favor. But if there's no provision in the law or in the Constitution, how do we go ahead with it? We can certainly request all stakeholders to meet and come up with a code of conduct. So, but does it translate into a binding judgment of the Supreme Court that can be acted upon then or not? If someone says, I won't, then federal government says, I won't do it. Then what do we do? My lord, we issue them a contempt notice on what basis? On a wish. My lord, my humble submission is that the enforcement of constitutional rights like Article 19, which not only put restrictions but inherently regulation is required. Sorry. So, sir, abhi to sir, aap jis tarah aapne baat ki, I think from whatever casual talk I've had with everyone is ready to sit down and talk about it. We can start with that. Not in this case, my lord. Not in this case. एक सेकंड मती साहब ये बात कर रहे ना, थोड़ा सा हम एक दूसरे का लिहाज तो रखें ना. हैदर वहीद साहब देखिए, अगर आपको कैजुअल टॉक्स करना है तो पिटीशन लाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना. मैं कह रहा था तो आपको कौन मना कर रहा है? आपकी पिटीशन देखिए पेंडिंग है 2022 से. ठीक, हम 24 में आ गए जी. जितनी मर्जी आप टॉक्स कर लें, आपको मना कर रहा है. हम पूछ रहे हैं कि अदालत क्या कर सकती है, आपकी मदद चलें, ये भी कर लें, मदद भी करना चाहते हैं, हम करें कैसे? ये बताएं हम किस किस्म का ऑर्डर पास करें. My lord, my humble submission is that the enforcement of Article 19 and the cognizance. बताएं ना आपने. अच्छा, enforcement of which provision of Article 19? ये भी आप देखिए, ऐसे गोल ऐसे ना कर देना. Article 19 में बहुत कुछ लिखा हुआ है. सर मैं कह रहा हूँ रीड Article 19. ये आपने लगाई है कॉपी, आपको 1 मिनट से मैं वैसे पूछ रहा हूँ, इन द मीनवाइल में पढ़ लूँ. ये रिमूवर एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, प्रोसीजर, ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स 2021.
My lord, I'm just going to provide, sir, I'll provide. इसे किताब में penal laws के I'll just provide, my lord. आप बता दीजिए क्या कौन सी आर्टिकल 19 में एक पार्ट है जो कि इजाजत देता है, दूसरा पार्ट है जिसमें मुमानियत है। आप मुमानियत कर रहे हैं या इजाजत वाली बात कर रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ आर्टिकल कह नहीं, कानून क्या कह रहा है? my lord, कानून ये कहता है, पढ़ लीजिए प्लीज। जी सर, मैं आर्टिकल, आजकल फैशन हो गया बगैर पढ़े चीजें आर्ग्यू करो। भाई देखिए, आर्टिकल 19 के दो पहलू हैं। एक पहलू कहता है सबको इजाजत है, फिर उसके बाद वो जाके रुकावट डाल देता है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल। I'll read आर्टिकल 19। हाँ, तो अब हमें आप कह रहे हैं आर्टिकल 19 को इन्फोर्स करें, तो कौन सा पहलू? दोनों पहलू करें, एक पहलू आप जी पढ़ देते ना। Freedom of speech. Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law, in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or the defense. एक सेकेंड, तो एक हो गया इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, पहला रुकावट। दूसरा इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस। चलिए इसको एक ही हम तस्वुर कर लेते हैं। दो और एनी पार्ट thereof, friendly relations। ये हो गया तीसरा रुकावट आ गई, तीसरी रुकावट आ गई। पब्लिक ऑर्डर, ये चौथी रुकावट आ गई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसेंसी और मोरालिटी, इसको पांचवी रुकावट कर लें। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, द कमिशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो 7 रुकावटें आ गई। आईन ने बनाई है, जरा ये हम वजाहत करते चलें, हमने नहीं बनाई है। बिल्कुल ठीक है। अब आप जब कह रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 19, तो अब आप बताइए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात कर रहे हैं, जो 2 राइट्स दी गई हैं, फिर इसमें ये आ गए रिस्ट्रिक्शंस। तो आप ये सिर्फ ये बात करना कि आर्टिकल 19 की इन्फोर्समेंट से मुराद आपकी क्या है? My lord, my humble submission is that the entire article is being applied to broadcast media but not to digital media. We agree. What do we do? आप तो ये चाहते हैं कि इसको रेगुलेट कर लेना। यू वांट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो यूट्यूब है, इसको रेगुलेट किया जाए, ये आप कह रहे हैं ना? इसको मैं कह रहा हूँ जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड है, उसको जो है डायरेक्ट किया जाए, बैठ के वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट। आपने जो बात कर दी ना, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड, चलिए कानून की बातें कर लेते हैं ना। नहीं, वो आप सिर्फ ये बताइए, माशाल्लाह you're a senior constitutional lawyer. Now, what do? We agree with you. Let's even go that far. How do we do it? After all, everything must be done in a particular way. Yes, my lord, to enforce constitutional rights of Article 19 and 25, and in keeping with balancing of constitutional rights, a direction can be given to the federal government. It is, after all, an executive. You're not asking for legislature to make law. A direction can be given to the federal government that made the first code in any case. It was the federal government. One second, please argue this case. I don't know what that case is or what the first case is. Please argue this case. Okay, let's go step by step. Okay, let's assume this direction is given.